हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वन लाइनर अबाउट द ह्यूमन बॉडी। तो आपने जो भी बुक्स पढ़े होंगे या फिर आपने कोई भी वीडियोस देखी होंगी तो उसके अंदर तरतीब में नहीं होता ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड। जैसे कि वन लाइनर जो है वो ब्रेन के मुतलिक पढ़े हैं, ब्रेन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। फिर जो है वो आपके पास जो है वो लिवर के बारे में है, फिर आइज़ के बारे में है, या फिर जो है आपके पास ब्रेन के बारे में है। तो मतलब एक तरतीब में नहीं होता और इससे याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसी वीडियो में मैंने क्या किया है कि सारी चीज़ें तरतीब में रखी है, एक ऑर्गन सिस्टम के रिलेटेड। हर ऑर्गन सिस्टम में हम सब कुछ पढ़ेंगे जो वन लाइनर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, या किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट में, या किसी भी जॉब के हवाले से जो है आपसे पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने ये द ह्यूमन बॉडी जो है इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया है। इस वीडियो के अंदर हम नर्वस सिस्टम तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग जो सिस्टम रहेंगे वो हम उसमें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम जनरल पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है हमारा। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। बेसिक जो यूनिट है वो सेल होता है, जो बेसिक यूनिट होता है हमारी लाइफ का, या स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है हमारी लाइफ का। फिर सेल मिलकर जो है वो टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन। उसके बाद ऑर्गन्स और द ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट परफॉर्म वन स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक पर्पस इन द ह्यूमन बॉडी। फिर ऑर्गन्स जो है वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो प्रॉपर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। जैसे कि डाइजेशन के लिए जो भी ऑर्गन्स होंगे तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो फिर पढ़ते हैं हम एनाटॉमी किसे कहते हैं। एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर इन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में या पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। व्हाट इज इन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे किस तरह वो फंक्शन करते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, उनकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे। जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है या उनके जो भी टिश्यूज, सेल या जो भी ऑर्गन्स होंगे उसका फंक्शन फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। देखें, कार्बन एटम्स जो है वो मिलकर डीएनए बनाते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर डीएनए मिलकर ऑर्गेनल बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर जो है वो सेल बनाते हैं, सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जो है मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे, ठीक है, यहाँ तो फीमेल है या कोई मेल है, कोई भी XYZ, ठीक है। तो हम बेसिक पढ़ेंगे जीन और डीएनए के बारे में। जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जो जीन्स होती हैं वो सेगमेंट्स होती हैं डीएनए की, दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिज्म। जो इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंटेन करती हैं, ठीक है। जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी यूनिट्स। जीन्स जो है वो हेरिडिटी के एक यूनिट होते हैं जो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो है डिलीवर होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन। देखें, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी है वो क्या होता है, वो जीन होता है, ना कि डीएनए या आरएनए। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। Chromosomes are thread-like structure located in the nucleus of cell। ये भी पूछा गया है, क्रोमोस जो है क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं या सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। डीएनए, देखें फुल फॉर्म डीएनए का बहुत बार पूछा गया है। डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल दैट कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, functioning and reproduction of all known living organisms। आरएनए क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटीन्स सिंथेसिस बाय ट्रांसफरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स वेयर इट इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। XX इज क्रोमोसोमल पेयरिंग फाउंड इन फीमेल्स। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल के अंदर वो होते हैं XX। ये ध्यान में रख लें आप, ठीक है। XX इज द सेक्स क्रोमोसोम्स इन द फीमेल, while XY is sex chromosomes in males।
म्यूटेशन किसे कहते हैं? म्यूटेशंस आर चेंज इन द डीएनए, जो चेंजेस होते हैं डीएनए के अंदर से डीएनए म्यूटेशन बोलते हैं ऑफ अ जीन एंड कैन लीड टू द वेरिएशन इन ट्रेड्स और इन सम केसेस जेनेटिक डिसऑर्डर, तो सब म्यूटेशन कहते हैं। सो हम वाला ने देखेंगे सेल के रिलेटेड, इन स्पेशली एनिमल सेल। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द सेल्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स फाउंड इन बैक्टीरिया एंड आर्किया लैक ए ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो ट्रू जो है न्यूक्लियस नहीं होता, while eukaryotic cells found in plants, animals, fungi and protists have a defined nucleus। उसके अंदर एक defined nucleus होता है, membrane होता है, ठीक है। The cell membrane is a semi-permeable barrier that encloses the cell content, regulating the movement of substance in and out of the cell। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल बैरियर होता है जो सेल को बाउंड करती है या सेल की एक बाउंड्री होती है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज जेल लाइक सब्सटेंस, बहुत बार पूछा गया है। द साइटोप्लाज्म इज जेल लाइक सब्सटेंस within the cell membrane that houses various organelles and cellular structures। Organelles are specialized structures within the cell that perform specific functions such as endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria and lysosomes। The nucleus is the control center of the cell, containing the cell's genetic material in the form of DNA which regulates cellular activities। Mitochondria are the powerhouse of the cell। बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, पावर सेल ऑफ द हाउस कौन सा पार्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, रेस्पॉन्सिबल फॉर generating energy in the form of ATP through cellular respiration। The endoplasmic reticulum is a network of membranes involved in the synthesis, folding, modification, and transport of proteins and lipids। The Golgi apparatus is responsible for packaging, modifying, and distributing proteins and lipids within or outside the cell। Lysosomes are membrane-bound organelles containing digestive enzymes that break down waste materials, cellular debris, and foreign invaders। The cytosome is an organelle that helps organize microtubules during cell division। Vacuoles are membrane-bound sacs that store water, ions, nutrients, and waste products। In animal cells, vacuoles are generally smaller and more numerous than those in plant cells। एनिमल सेल्स डज नॉट हैव सेल वॉल। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि एनिमल के अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, while प्लांट सेल हैव द सेल वॉल। ये है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो आउटर मैंने आपको कहा था बाउंड्री है वो उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होते हैं वैक्यूल्स, ये जो चार हैं ये हैं वैक्यूल्स, और ये जो जेल लाइक सब्सटेंस है ये पूरा वाला इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। These are the ribosomes, this one and this one। These are the centrosomes। ये जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि ये जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। These are the mitochondria which we call power house of the cell। ये होते हैं वेक्यूल्स, ये होते हैं लाइसोसोम्स। सो ये होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो सेंटर और एक बना होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। देखें, इन द ह्यूमन बॉडी वी हैव 11 ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। कौन से हैं? कार्डियोवैस्कुलर है, डाइजेस्टिव है, एंडोक्राइन है, इंटरक्यूमेंट्री है, लिम्फेटिक है, मस्कुलर है, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवरिंग अप टू नर्वस सिस्टम। उसके बाद रिमेनिंग जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हम जो है सेंस ऑर्गन्स भी पढ़ेंगे, और जो भी चीज़ें इस सिस्टम्स में रह जाती हैं वो भी हम उसमें कवर करेंगे। So first of all, we are going to start cardiovascular system। The cardiovascular system includes the heart, blood vessels and the blood।
The cardiovascular system delivers oxygen and nutrients to cells while removing waste products. The heart has 4 chambers, 2 atria, upper chambers जिसे हम कहते हैं left atrium and right atrium, and 2 ventricles, lower chambers whom we call left ventricle and right ventricle. The heart is located in the thoracic cavity. ये बहुत बार पूछा गया है कि हार्ट जो है इसकी लोकेशन कहाँ है. That is located in thoracic cavity, slightly to the left of the center of the chest. The heart is approximately the size of clenched fist. Clenched fist जितना होता है जिस इंसान का, उतनी साइज होती है the heart की. ठीक है. The heart has its electrical conduction system which controls the heartbeat. The largest artery in the body is aorta, which originates from the left ventricle. Veins carry blood toward the heart, while arteries carry blood away from the heart. Capillaries are the smallest blood vessels where gas exchange occurs. Veins जो हैं वो deoxygenated blood carry करती हैं, while arteries carry oxygenated blood. In the case of pulmonary artery जो है वो क्या करती है, deoxygenated blood जो है वो carry करती है, while pulmonary vein जो होती है वो oxygenated blood carry करती है. In the case of pulmonary only. Blood is composed of plasma, RBC जिसे हम बोलते हैं red blood cells, या उसका दूसरा नाम है erythrocytes, white blood cells दूसरा नाम है leukocytes, and platelets, thrombocytes. The pH value of human blood is 7.35 to 7.45. अगर एवरेज देखा जाए तो 7.4 होगा. Blood groups are determined by the presence or absence of specific antigens on the surface of RBC. The ABO blood group system categorizes blood into 4 main systems A, B, AB and O based on the presence or absence of antigens A and B. The Rh factor, also known as rhesus factor, is another antigen present on the surface of RBC. A person can be Rh positive or Rh negative, leading to 8 possible blood types: A positive, A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative, O positive and O negative. Individuals with blood type O negative are considered as a universal donors because their blood can be transfused to patients with any blood type. Individuals with the blood type AB positive are considered universal recipients because they can receive blood from donors of any type. ये एक चार्ट बना हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको जो है ब्लड दे सकता है. ठीक है, ये हैं डोनर्स और ये हैं रेसिपेंट्स या एक्सेप्टर्स. देखें, ओ नेगेटिव जो है वो सबको ब्लड दे सकता है. ओ नेगेटिव को भी, ओ पॉजिटिव को भी, ए नेगेटिव को, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव को, देखिए सबको दे सकता है. दैट इज वाई ओ नेगेटिव इज कॉल्ड डोनर, यूनिवर्सल डोनर. जबकि ओ पॉजिटिव सिर्फ ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है एंड ए बी पॉजिटिव को दे सकता है. ए नेगेटिव को, ए पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को. ए प्लस जो है या ए पॉजिटिव जो है वो ए पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है. बी नेगेटिव ब्लड जो है वो बी नेगेटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है. जिसका ब्लड बी पॉजिटिव हो वो बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है. जिसका ब्लड ए बी नेगेटिव हो वो ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है. जबकि ए बी पॉजिटिव वो किसको ब्लड दे सकता है, सिर्फ ए बी पॉजिटिव को दे सकता है. देखें, ए बी पॉजिटिव सबका ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, आप नोट कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपेंट. ठीक है, ए ओ नेगेटिव का भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव का, ए नेगेटिव का, ए पॉजिटिव का, बी नेगेटिव का, बी पॉजिटिव का, ए बी नेगेटिव का एंड ए बी पॉजिटिव का. दैट इज वाई ए बी प्लस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपेंट.
RBC are responsible for transporting oxygen. The lifespan of RBC cell is 120 days. ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। WBC या वाइट ब्लड सेल्स आर एसेंशियल फॉर इम्यून सिस्टम। ठीक है, WBC को कह सकते हैं पुलिस ऑफ द बॉडी या सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। द लाइफ स्पेन ऑफ RBC सेल्स इज 5 to 21 days. Sorry, this should be the WBC. This is for WBC. The lifespan of WBC cell is 5 to 21 days. Platelets are crucial for blood clotting. Plasma is yellowish fluid that carries blood cells and nutrients. The average adult human has about 5 liters of blood in their body, या कह सकते हैं 9 to 12 pints. एक पिंट के अंदर तकरीबन 0.47 लीटर आते हैं, और एग्जाम में कभी कभार रेंज भी दिया होता है तो 5 to 6 लीटर्स होता है ब्लड। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट्स इन अ क्लोज सिस्टम नोन एज सर्कुलरी लूप। ठीक है, सर्कुलेटरी लूप कहा जाता है। देयर आर टू मेन सर्कुलेटरी लूप्स, द पल्मोनरी सर्कुलेशन जो टू द लंग्स होता है, एंड द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी होता है। द पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ऑक्सीजनेशन कहाँ होती है? लंग्स के अंदर। ठीक है, द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन delivers oxygenated blood to the body's tissues and organs. The average heartbeat is 72 and 80 per minute in normal men and women respectively. ठीक है, हार्ट बीट जो है मेन के अंदर वो 72 होती है, जबकि वेमेन के अंदर 82 होती है। तो रेंज होगी 70 to 80 या 72 to 80। The average weight of human heart is 300 gram. Leukemia is a disease of blood. The heart contracts to pump blood into circulation. The atria receive blood and pass it to the ventricles. The right ventricle pump blood to the lungs, while the left ventricle pump blood to the rest of the body. Blood pressure is the force of blood against the wall of blood vessels. A blood pressure reading is expressed as a systolic diastolic pressure. Example 120 per 80, जिसे हम कहते हैं अपर प्रेशर लोअर प्रेशर। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल रेंज इन एडल्ट 120-80। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर ड्यूरिंग हार्ट बीट्स एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर बिटवीन बीट्स। हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर, a risk factor for cardiovascular disease. Coronary artery disease, CAD जिसे कहते हैं, is the leading cause of heart attacks. मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक occurs, जिसे हार्ट अटैक बोलते हैं, occurs when blood flow to the heart muscle is blocked. स्ट्रोक जिसे cerebrovascular accident कहते हैं, results from disrupted blood flow to the brain. तो स्ट्रोक हमेशा दिमाग की वजह से होता है ना। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसे CHF कहते हैं इज द हार्ट्स इनएबिलिटी टू पंप इफेक्टिवली। एंजियोप्लास्टी इज द प्रोसीजर टू ओपन ब्लॉक्ड और नैरोड आर्टरीज। जो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं उसको ओपन करने को हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी बाईपास सर्जरी redirects blood around the blocked coronary arteries. बाईपास जो होता है, कोरोनरी बाईपास होता है, जो ब्लॉक्ड आर्टरीज होता है उसको बाईपास करके एक आर्टरी बनाई जाती है, आर्टिफिशियल आर्टरी।
Pacemakers are devices used to regulate abnormal heart rhythms. Heart transplantation is a treatment for end-stage heart failure. ECG is used for the diagnosis of ailment of heart. The volume of blood is approximately 7% of body weight. तो मैंने वो जो है उठाए हैं वन लाइनर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मोस्टली. मुझे जो है वो MBBS नहीं करवानी, बिकॉज आई हैव टू कवर ऑल दोज वन लाइनर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो CSS या दूसरे एग्ज़ाम्स SPSC FPSC या दूसरे जो UPSC उसमें पूछे जाते हैं या कवर किए जाते हैं, ठीक है, या MCQs में पूछे जाते हैं हमारे पास. तो मैंने वही कोशिश की है कि वही मैं कवर करूँ. सो अब स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. The digestive system is a complex set of organs responsible for processing food and absorbing nutrients. It includes the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver, gallbladder, and pancreas. The digestive system begins with the mouth, where mechanical and chemical digestion starts. The esophagus is a muscular tube that moves food from the mouth to the stomach. The small intestine is where most nutrient absorption takes place. The large intestine is primarily responsible for absorbing water and electrolytes. The liver produces bile, which is stored in the gallbladder and helps digest fats. The pancreas secretes enzymes and hormones to aid digestion and regulate blood sugar. Digestive enzymes, see the digestive enzymes, amylase breaks down carbohydrates into sugars. Proteases digest proteins into amino acids. Lipases break down fats into fatty acids and glycerol. Common digestive disorders. Appendicitis is inflammation of appendix, often required surgical removal. सिंपली इसको appendix भी बोलते हैं. Peptic ulcer are often stores that form on the inner lining of the stomach or the upper part of the small intestine. Hemorrhoids are swollen blood vessels in the rectum or anus caused by straining during bowel movement. Gallstones can form in the gallbladder and cause digestive issues. Jaundice is often a sign of a problem with the liver, gallbladder, or pancreas caused by the buildup of substance called bilirubin in blood. Preventive measures. A diet rich in fiber can help prevent constipation and maintain a healthy digestive system. Means fiber is really useful to prevent the constipation. Saliva contains amylase, an enzyme that begins, amylase एक enzyme होता है that begins digesting carbohydrates in the mouth. Drinking enough water is crucial for maintaining mucus and saliva production, which aids digestion. तो ये था digestive system. Now we'll start endocrine system. The endocrine system is a network of glands that produce and secretes hormones. Hormones are chemical messengers that regulate various bodily functions. The major glands of the endocrine system includes the pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, and pancreas. The pituitary gland. The pituitary gland is often called master gland. बहुत बार पूछा गया है master gland किसको कहते हैं? The pituitary gland is called master gland because it controls many other endocrine glands. It's divided into the anterior and posterior pituitary lobes. The anterior pituitary releases hormones that control growth, metabolism, and stress responses.
The posterior pituitary releases oxytocin and vasopressin, antidiuretic hormone. The thyroid gland. The thyroid gland regulates metabolism. An overactive thyroid, hyperthyroidism, can lead to the weight loss and anxiety, or underactive thyroid can result in weight gain and fatigue. The parathyroid gland. The parathyroid gland regulates calcium and phosphorus levels in the blood. They produce parathyroid hormones to control calcium absorption in the intestines and bone breakdown. There are two adrenal glands located on top of each kidney. The adrenal cortex produces corticosteroids including cortisol and aldosterone. Cortisol helps manage stress and regulates metabolism. Aldosterone controls blood pressure and electrolyte balance. Now see the pancreas. The pancreas is both an endocrine and exocrine gland. The endocrine part produces insulin and glucagon. See, the pancreas produces insulin, especially the endocrine gland. Endocrine gland is a part of pancreas. Insulin lowers blood sugar level by promoting glucose uptake by the cells. Glucagon raises blood pressure levels by stimulating the liver to release stored glucose. The pineal gland. The pineal gland produces melatonin, which regulates sleep-wake cycles. It is often called third eye because of its role in circadian rhythm. The thymus gland. The thymus gland is crucial for immune system development, especially in children. It produces thymosin hormones that stimulate T cell maturation. The gonads, reproductive glands. The testes in the male produce testosterone, which controls the male's sexual characteristics. The ovaries in female produce estrogen and progesterone, influencing female sex traits and the menstrual cycle. Endocrine disorders. Diabetes is common endocrine disorder characterized by high blood sugar level. Now see integumentary system. The integumentary system is the body's largest organ system. If you are supposed to ask which is the largest organ system, it is the integumentary system, consisting of the skin, hair, nails, and associated structures. Its primary function is to protect the body from the external environment. The skin is the largest organ in the human body. It is mostly asked. Skin is composed of three layers. One is epidermis, second one is dermis, and third one subcutaneous dermis, hypodermis भी जिसे हम बोलते हैं. The epidermis is the outermost layer and provides a protective barrier. The dermis controls blood vessels, nerve ending, and sweat glands, while the hypodermis consists of fat cells that insulate and store energy. See the structure of the skin. This one is epidermis, which contain sensory nerve ending or hairs. This one is dermis, in which we will see these things. Nerve. See, from this point to this point, it is epidermis, while this one is hypodermis, in which we see the fat cells or collagen or fibroblasts. Functions of the skin. The skin acts as a physical barrier preventing the entry of the pathogens and chemicals. It regulates body temperature by sweating and dilating or constricting blood vessels. Normal body temperature is considered to be 37 degrees centigrade.
or in Fahrenheit it is 98.6 Fahrenheit, or in Kelvin it is 310 Kelvin. Skin contains sensory receptors for touch, temperature and pain. It synthesizes vitamin D when exposed to sunlight. The skin helps with the excretion of small amounts of waste products. Skin serves as a barrier to prevent excessive water loss from the body. Hair is made up of protein called keratin. Keratin, see? हेयर्स जो है वो एक प्रोटीन से बने होते हैं जिसे हम बोलते हैं केराटिन एंड ग्रोज फ्रॉम हेयर फॉलिकल्स इन द स्किन. Nails are also made up of keratin and grows from the nail matrix. Hair and nails serve protective functions. Sebaceous gland produce sebum and oily substance that helps keep skin and hair moisturized. When sebaceous gland become blocked, acne can develop. जब ये फ्लूइड जो है ये ऑयली सब्सटेंस नहीं होता तो एक्ने प्रोड्यूस हो जाता है. Sweat glands release sweat which help regulate body temperature. Acrine sweat glands are responsible for producing sweat that cools the body. Apocrine sweat glands are found in areas like armpits and are associated with the body odor. जो बदबू होती है वो एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड्स की वजह से होती है. Skin color is determined by the amount of melanin in the skin. Melanin is pigment that provides protection against UV radiation. Individuals with more melanin have darker skin, while those with less have lighter skin. जितना melanin ज़्यादा होगा, skin will be the darker. Skin cancer can result from excessive UV radiation exposure. Tattoos are created by injecting ink into dermis layer. Note it, it's dermis layer. Tattoos removal is possible but can be costly and time consuming. तो इसे काम नहीं करें आप, tattoos नहीं बनाएं, otherwise it will be expensive to remove it. Wrinkles and anti-aging. Wrinkles form due to decrease in collagen and elastin production of the skin. Lymphatic system. Now we'll cover the lymphatic system. It helps the body fight infections and disease. Lymph, a clear fluid, carries WBC throughout the body. Lymph nodes acts as the filters trapping harmful substances. The lymphatic system includes lymphatic organs like the spleen, thymus and tonsils. Tonsils and adenoids are part of the lymphatic system, protecting against infections. The spleen controls blood vessels and removes old blood cells. The spleen acts as a blood reservoir and filters blood. It is also called graveyard of RBC or the end station of the RBC. Malaria is a disease which affects the spleen, liver too as well. The thymus gland matures special WBC called T lymphocytes. They are produced in the bone marrow and matures in the thymus gland. Lymphatic capillaries collect excess fluid and return it to the bloodstream. Lymphatic vessels are similar to the blood vessels but carry lymph instead of blood. Lymph is similar to the blood plasma but lacks RBC and platelets. The lymphatic system relies on muscle movement and breathing to move lymph. The lymphatic system transports fats and fat-soluble vitamins from the intestine to the bloodstream. Now we will cover muscular system. The muscular system is responsible for movement in the body. It includes over 639 muscles, or somewhere we see that approximately 600 muscles, but exact number is 639 muscles throughout the body. Muscles work together with bones and joints to create motion. Skeletal muscles are attached to bones by tendons.
Smooth muscles control involuntary movements in organs. Cardiac muscles make up the heart and are responsible for contractions. Tendons are strong connective tissue that attach muscles to the bones. Ligaments connects bones to each other and provides stability to joints. The biceps and triceps are example of skeletal muscles. The skeletal muscles are under voluntary control. Muscles play a role in protecting internal organs. Facial muscles allow for expression and communication. Muscles in the eye enable vision and movement of the eyeball. The tongue is a strong muscle. Remember, the tongue is a strong muscle that aids in speech and swallowing. Myalgia refers to the muscles pain or aching often caused by overuse or injury. Muscle spasms are involuntary contractions that can be painful and uncomfortable. Muscles store energy in the form of glycogen for quick use during exercise. The diaphragm, a dome-shaped muscle, plays a vital role in the process of breathing. The sartorius muscle running from hip to the knee is considered to the longest muscle. The gluteus maximus is the largest. See, sartorius muscle is the longest, while gluteus maximum is the largest muscle in the human body. It forms the bulk of the buttocks and is responsible for movement like hip extension and outward rotation of the thigh. The stapedius muscle found in the middle ear is considered as the smallest muscle in the human body. The masseter, a jaw muscle, is considered strongest muscle in the human body. It is in jaw muscle. Nervous system. Now we will cover the nervous system, and it is the last system in this video. We will going to cover. बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो और आपको याद करने में आसानी हो जाए. Nervous system. The nervous system is a complex network that coordinates the body's activities and transmits signals between different parts. It can be divided into main parts, the central nervous system, whom we call CNS, and the peripheral nervous system. The central nervous system includes brain and spinal cord, while the peripheral nervous system consists of nerves that extend throughout the body. Neurons or nerves are the basic functional unit of the nervous system, transmitting electrical and chemical signals. The brain is the control center of the nervous system and is responsible for processing information and controlling body functions. The spinal cord is a bundle of nerves that transmits signals between the body and the brain. The PNS includes sensory neurons that receive information from the environment and the motor neurons that control muscle movement. सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जब रिस्पॉन्स जो देते हैं वो थ्रू द मोटर न्यूरॉन होता है, ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं मसल मूवमेंट को. सेंसरी नर्व्स आर न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन. सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी नर्व्स और सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, वो कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन and spinal cord, while motor nerves from brain or spinal cord to the other organ. Interneuron connects sensory and motor neurons. Motor nerves are involved in controlling reflex actions, ठीक है. रिफ्लेक्स एक्शंस वो होते हैं जो कह सकते हैं इनवॉल्यूंटरी जो एक्शंस होते हैं. Cranial nerve go from brain to eyes, mouth, ears and other parts of the head, whom we call cranial nerves. Central nerves किसे बोलते हैं या कहाँ से कहाँ जाती हैं? Central nerves are in the brain and spinal cord.
Peripheral nerves go from spinal cord to the arms, hands, legs and feet. Autonomic nerves go from spinal cord to the lungs, heart, stomach, intestines, bladder and sex organs. The somatic nerve system controls voluntary movements and reflexes. The brain is protected by the skull and the spinal cord is protected by the vertebral column. The brain is divided into different regions, each responsible for various functions like thinking, memory, and coordination. The cerebrum is the largest part of the brain and controls conscious thoughts and actions. Remember, the cerebrum is the largest part, not cerebellum. It's the cerebrum which is the largest part of the brain, which controls conscious thoughts and actions. The cerebellum is responsible for balance, coordination, and fine muscle control. The brainstem controls basic life functions such as breathing, heartbeat, and blood pressure. The peripheral nervous system transmits sensory information to the central nervous system and carries motor commands to the muscles. Nerves are bundles of fibers that transmit signals between the central nervous system and rest of the body. Reflexes are automatic responses to the stimuli controlled by the spinal cord without input from the brain. The nervous system communicates through electrical impulses and chemical signals. Synapses are junctions between the neurons where signals are transmitted using neurotransmitters. The parasympathetic nervous system controls rest and digestion, promoting relaxation and conserving energy. Neurotransmitters like dopamine, serotonin, and norepinephrine regulates mood, sleep, and other bodily functions. The hypothalamus regulates body temperature, sleep-wake cycle, hunger and thirst, and controls the release of hormones from the pituitary gland. The limbic system is involved in emotions, memory, and motivations. The meninges are protective membranes that cover the brain and spinal cord. The frontal lobe of the brain is responsible for decision making, problem solving, and voluntary movements. The parietal lobe processes sensory information like touch, temperature, and pain. The occipital lobe is dedicated to processing visual information from the eyes. The temporal lobe is involved in hearing, language, and memory. The spinal cord relays signals between the brain and the rest of the body and controls simple reflexes. Spinal cord injuries can lead to the paralysis and loss of sensation below the injury site. The midbrain, pons, and medulla oblongata are the three main regions of the brain stem. The medulla oblongata controls involuntary functions like breathing, blood pressure, and heart rate. The pons acts as a bridge between the different parts of the brain, helping to relay messages between the cerebrum and the cerebellum. The midbrain is responsible for controlling vision, hearing, motor control, sleep-wake cycles, and temperature regulation. The hippocampus is essential for formation of storage of long-term memories, which can be used whenever it is needed. The cerebellum coordinates voluntary movements such as posture, balance, coordination, and speech, resulting in smooth and balanced muscular activity. EEG records the activity of brain like ECG is for the heart. The brain uses 20% of total oxygen and blood in the body. Adult human brain is about 2% of body weight
it is almost 1200 to 1300 ग्राम और 44 to 48 ounces. फीमेल के अंदर 44 ounces होता है weight of the human brain, while in males it is 48. Biological death of the patient means death of the tissues of the brain. Remember it. Alzheimer's disease is progressive neurological disorder that leads to the memory loss, cognitive decline, or behavioral changes. The autonomic nervous system regulates involuntary bodily functions. ये बहुत बार पूछा गया है. The autonomic nervous system regulates involuntary bodily functions including heart rate, digestion, respiratory rate, pupillary response, urination, and sexual arousal. The sympathetic nervous system activates the body's fight or flight response during the times of stress or danger, leading to increased heart rate, dilation of pupil, and heightened alertness. Neuroimaging techniques including कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसे हम सिटी बोलते हैं या सिटी स्कैन बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई बोलते हैं. तो ये फुल फॉर्म आप याद कर लें, समटाइम ये जो है फुल फॉर्म पूछे जाते हैं या डिस्टेंस फॉर. और पीईटी होता है पोस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, एंड फंक्शनल एमआरआई enables the visualization and assessment of the structure, function, and activity of the brain and nervous system, providing valuable insights into the diagnosis, treatment, and management of various neurological and psychiatric disorders. तो इसी वीडियो में हमने कवर किया नर्वस सिस्टम में. नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग सिस्टम कवर करेंगे. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. तो काइंडली हमारी वीडियो को जो है आगे शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें. कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखना. सी यू, टेक केयर.